किसी को कोई डाउट है प्रीवियस क्लास से या फिर अभी जो हमने अब इससे पहले जो भी किया है उस पे, राइट, बिफोर स्टार्टिंग दिस, और एनी क्वेश्चन? और साइलेंस मीन्स नो, राइट? अभी तक सब ठीक ठाक है, चल रहा है, राइट? ओके, so now let's get started, and today we'll just see that what is Power Query, right? How we can just connect the different data sources uh, in into Power BI, and how we can just perform the transformation activity in Power BI. Then also we'll just see some cleanup activity like combining data, appending and merging, right? Then how we can just scrape the same, append data, add an index in column, clean up data. So there are multiple things we'll see how we can do in Power BI. Next, we'll just see that how we can even use the import option, right? How we can use the direct query. यदि हमें data को SQL query के through यदि load करना है, then how we'll do that. And also we see that how we can use the parameter in Power BI, right? In Power Query, right? So first, what we'll do from here, जब हम इसको लोड करते हैं पावर बीआई को, फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे, then this will just look like this. Let me just open new Power BI here. So I'll just open a new Power BI, and in this जब हम इसको लोड करते हैं, then canvas would be something like there is some watermark of some other sources, right? Import data in Excel and all, right? Because इसमें already हमने data को load कर दिया, so that's why here we are seeing the table also, and here this is something that Power view here. बट जब फर्स्ट टाइम हम इसको लोड करते हैं तो इसका व्यू कुछ और होता है. सो लेट मी शो यू दैट. सो जब तक ये ओपन हो रहा है, लेट मी शो यू सम एसक्यूएल क्वेरीज, राइट? सो गाइस, व्हाट हैपेंस जब हमें पावर बीआई में डेटा को पिक करना हो, other than Excel, CSV or other sources, if we'll have to pick the data from database, the database level है, and from there we just wanted to pick the data for visualization purpose, right? So in that case there are two methods. Either what we can do, we can pick the entire table, right? Database से connect करेंगे, then पूरा 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 table हम वहां पे डाल देंगे. Second way is that just जो required है, only suppose हमें 5 कॉलम चाहिए, so only what I'll do, I'll just select only 5 columns, and then I'll pick that and then push into database directly, right? So दोज हु डोंट नो एसक्यूएल, राइट, उनके लिए स्पेशली हम एसक्यूएल में क्या करते हैं, आपके पास ऑलरेडी ये डेटाबेस डेटा इस तरीके से होगा एसक्यूएल के अंदर, राइट? देयर वुड बी मल्टीपल टेबल्स इन इट. अब जिस भी टेबल को हमें एक्सेस करना है, सपोज हमें कस्टमर टेबल है इसके अंदर, उसको एक्सेस करना है, सो फॉर दैट विल यूज सिंपल क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, एंड देन ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे देगा, राइट? सिमिलरली यदि हमें दूसरा कोई टेबल के डेटा को एक्सेस करना है, सारे के सारे कॉलम को लिस्ट करना है, देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन टेबल का नाम लिखेंगे, एंड देन दिस विल गिव अस द इंटायर रिजल्ट. सो एसक्यूएल के अंदर सेलेक्ट क्वेरी का यूज करके हम डेटा को फेच करते हैं फ्रॉम डेटाबेस. नाउ अब यहाँ पे आपके पास दो टेबल है, एक टेबल तो कस्टमर है, दूसरा है इसका ज्योग्राफी है. हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, उसका बर्थ डेट, राइट, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ईयरली इनकम कितना है वो, एंड देन ऑल्सो आई जस्ट वांट टू पिक मोर इंफॉर्मेशन इन इट. हमें एक क्वेरी बनाना है, एंड इन दोनों में से इस वाले जो ज्योग्राफी वाला टेबल है उसमें से हम इसका ज्योग्राफी यानी सिटी पिक करेंगे, राइट? आई जस्ट पिक ओनली द सिटी फ्रॉम दिस, किस सिटी में ये कस्टमर रहता है, राइट? एंड देन ये क्वेरी क्रिएट करने के बाद आई जस्ट कॉपी दिस क्वेरी, and then I'll pass the same in Power BI directly to load the that this data, right, from these two tables, instead just getting these two table in Power BI module directly, right? So इसमें क्या होगा कि only आपके पास limited column जाएगा Power BI में, and in this way performance जो कोई इसका होगा Power BI का, that would be much more faster than instead we are just loading the entire table or database in Power BI module, right? So let me just open this. Now it is open. I just click on the report here.
Still this is in hang stage. Okay. So now जैसे ये पावर भी आपका लोड होगा, this would look like this, right? Here we have the import data from Excel, import data from SQL Server, paste data to a blank table, right? It's copy paste यदि हम clipboard में भी data लेकर and then even we can just work on that, right? Copy करके and then यहाँ पे paste करेंगे, then still even this will just take data as input and then उस पे work करेगा. सिम लास्ट क्लास में हम देखा कि किस तरीके से हम इसका सैंपल डेटा ऑलरेडी जो पावर बीआई में है उसका यूज करके इवन वी कैन जस्ट क्रिएट द सैंपल विजुअलाइजेशन इन दिस. सो जब हम इसको हम लोड करेंगे एंड आवर रिक्वायरमेंट इज टू गो इन पावर क्वेरी राइट मॉड्यूल. सो फॉर दैट I just click on this. Here we have the transform data. It means that Power Query means that it's allow us to perform the transformation on data. जो भी हम data raw data upload करते हैं उसको change करना, उसके उस पे ETL activity का perform करने के लिए we'll just use the Power Query section. So I'll just go and then click on transform. Then this will just move us to transform module, right? Power Query module for this one. So now here we have the Power Query module, right? Now we are in Power Query module here. So in Power Query module, it allows us to connect from multiple data sources, right? Either we can connect with Excel file, CSV file, right? Or PDF file, websites, right? Even we can just pick data from SQL Server and other data sources also. Let's see what are those data sources here. So I'll just click on the data source here, right? I'll just click on this. Let me just close one Power BI instance. I think it's hang stage. So in this way, what we can do, let me just see if I'm able to work on this. So here we have the different data sources, right? So here we have all the data sources that we can just connect with Power BI directly, right? So Excel workbook, SQL Server, analysis services, text, CSV file, wave, and all. If I just click on more, then here we have also more option available. There are almost all data sources are being supported by Power BI. जितने भी डेटा सोर्स अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट डेटा सोर्सेस से हम पावर बीआई में डेटा को पिक कर सकते हैं एंड इवन वी कैन जस्ट परफॉर्म द एनालिसिस हियर, राइट? सो लेट मी जस्ट क्लोज वन ऑफ द पावर बीआई इंस्टेंस बिकॉज ये प्रॉब्लम कर रहा है. Okay, so here we have all the data sources here available, right? These are all data sources available. These are the files from where even we can just pick the data, Excel file, text file, XML file, JSON. Even we can just pick the multiple file available in folder also, PDF file, right? And these are all. Even we can just pick data from SharePoint to folder too, right? Next here we have the database. So these are the database, these are databases that is being supported by Power BI here, right? Next here we have Microsoft Fabric. So even we can just get data from Microsoft Fabric also. These all are the inbuilt things. Power Platform, Azure, online services and all. So ये सारे के सारे data sources हैं जिससे हम data को connect कर सकते हैं Power BI के अंदर, right? For now, what I'll do, I'll just use the SQL server here. I'll just pick the database, and for now I'm just going to pick the SQL server database. I'll just connect this, click on connect here, right? And जैसे ही इसमें हम click करेंगे connect के लिए, this will just ask us some few information, right? So here we have, here it is just asking us the server name and then database. So database is optional one, right? Right now I'm just going using import one, right? So import जब भी हम करेंगे then हमें बस server का name देना है and then that's it. Now this will just connect the database
and server, and then जो भी table उसमें available होगा, even it will just list all the tables available, and as per our requirement even we can just pick the tables from that, right? So I'll just go and then pass the server name. So for that I'll just refresh this, right? So that even I can just get the server name from here. And here we have the server name. So this is a server name. I'll copy this and इसी को हम यहाँ पे पास करेंगे पावर क्वेरी के अंदर. Shall I pass the server name? And database is optional, right? So for now I'm not passing the database for now. I just click OK, and then this will establish connection with this SQL server here, right? So its connection type is Windows authentication, so that's why it is not asking for further credential and all, right? But यदि हम इसमें already हमारे जो database है उससे connect करने के लिए यदि SQL यूजर आईडी एंड पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, देन दिस विल, जैसे हम सर्वर पे डालेंगे, राइट, देन दिस विल आस्क फॉर क्रेडेंशियल एंड ऑल, राइट, देन ओनली वी कैन जस्ट डू दैट. नाउ हियर वी कैन सी ये अब पूरा 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 का पूरा जो है सर्वर यहाँ पे लोड हो गया, राइट. एंड एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन पिक द tables from this. Suppose I'm just going to pick the table from learning one, right? I'll click here and then I'll pick the customer info, right? And then, so here we have the customer, and also I'm just going to pick the geography information of this customer. So I'll just pick two tables here, right? And then I'll click OK. Right, so these are the two tables, and then this will show us even the preview of this. So what will happen? This will just load all the information available in these two tables. There are some irrelevant columns also जो कि हमारे data में आ जाएगा when we load this. I'll just click OK and that's it. Now this will create a query here, right? And then अब यहाँ पे orders एक single query है, only one query है कि यहाँ पे orders हमें दिख रहा है. Then when I'll just load this data also, then this will just create one more query here. Now here we have टू क्वेरी बिकॉज हमने दो टेबल्स है उससे डेटा को पिक किया है, राइट. नाउ दिस विल जस्ट लोड ऑल द कॉलम्स अवेलेबल इन दिस डेटा सेट. Let me just close one of the Power BI instance. It is taking too much time. So Power BI text more system resource, right? So in case यदि system resource इसको नहीं मिलेगा, then this will just perform its perform would be little bit slower one, right. I'll just close this also, right, and I don't save this for now. Now we are in Power BI module, right. So now इसने क्या किया है, अब जो हमने डेटा लोड किया है, so there are two tables. First हमने पिक किया था dim customer, so here we have all the customer information available, and second here we had picked the geography one, right. And now this is loaded here, both the column is loaded here, right. Sorry, data from both the table is loaded here.
राइट। सपोज अब यहाँ पे हम डेटा एनालिसिस करेंगे, विल परफॉर्म अगेन हियर द नॉर्मलाइजेशन वन, राइट। विल जस्ट कीप ओनली दोज कॉलम्स फ्रॉम दिस जिसका रिक्वायरमेंट है, जो irrelevant column है, what I'll do, I'll just first analyze that, and then I'll see that if that column is not required, then we'll remove that from this data source, right? So here we have the geography one, geography key, so this would be available in this customer also, right? So here we have the geography key, so this will be used for creating the relationship between these two tables, right? So I'll just keep that for now. First we'll just clean the geography table here, right? So here we have geography key, city is available here, so I'll just keep this as it is, but I'll see the values available in this city, and we'll see that if there are any case where we have data inconsistency or there are leading or trailing spaces available, then we'll even perform or transform that data too, right? So for now we are good. So here we have the single information. Here we have the state and province. So here we are just getting the information of 17 and all. So also here we have alphanumeric value available, alpha value available, and numeric value also, right? So I'll just keep this as it is for now, although I don't need this column, but I'll just keep this for now. Here we have other state and province name here, so I'll just keep, see if we have any duplicate or misspelled value. So in this way we don't have such thing available, right? इस तरीके से आपका डेटा ये पावर बीआई मॉड्यूल में लोड हो गया है फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर डायरेक्टली, राइट। एंड यहाँ पे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं एक एक देख के, राइट। इसका यदि क्लीन अप परफॉर्म करना है, देन इवन वी कैन जस्ट परफॉर्म द क्लीन अप ऑफ दैट, राइट। सो हियर वी हैव दिस डेटा आल्सो, दिस इज फाइन। गुड थिंग इज दैट पावर बीआई के अंदर, राइट, आई जस्ट गो ऑन व्यू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैलिड एरर एंड एम्प्टी वन, राइट। सो दिस विल जस्ट gives the full statistics of that column, right? And इसको हम enable कर सकते हैं। I just go on view, and then here we have the column quality, right? Column quality को यदि हम check कर देते हैं, then this will show you the information about column. So it's always good, it is a good practice to always keep this checked, so that हमें हर एक कॉलम का इंफॉर्मेशन मिल सके कि इसमें क्या डेटा है एंड कितना परसेंट वैलिड डेटा है, राइट। सपोज इफ आई हैव टू सी द एम्प्टी कितना परसेंट डेटा है, so even this will just tell you about the empty one. यदि हम इसमें कोई डेटा टाइप चेंज करते हैं, then here even we can see that how many errors percentage is available in this, so even this will just tell you about that. Although not always believe on this, sometime what happens, ये जो information है ये सही information नहीं देता है, right? So that's why we need to just view the data in this way, right? Now I'll just move ahead, and then we'll see what are the information we have here. So again here we have the this one, then here we have the dim customer here. So these all are the related information here: dim customer, dim reseller, dim sales territory. These all are the related column information we have for this data set. So I'll just keep this for now, right? I'm not going to remove that. So in this, I find that all the columns are valid, right? I'll just keep this geography data set as it is. Now I'll go to customer one, right? So in customer, here we can see that title, in title, we can see 99% of columns, right? 99% cells are empty here, right? So I'll just click on this, and then we'll see that what are the information we have available in this. So here we have Mr. or Mrs. information for few, and then rest here we have null, right? So what I'll do, I'll just check and then change the Mr. or Mrs. information. Either what we can do, even we can just remove this title column, or if we can, then what we'll do, we'll just remove or replace this null with certain value too, right? So I don't need this title information, right? So what I'll do, I'll just go here and then I'll remove this column from this. So here we have option. I'll just go on home tab, and then here we have option to remove the rows, and also we have removed to the columns. I'll just click on this. Then here we have selected the title column here, and I'll just click on remove, and then this will remove this column from here, right? Now this column is removed. अब जो भी स्टेप हम परफॉर्म करेंगे, हियर वी कैन सी दैट स्टेप इज रिकॉर्डेड, राइट। एंड वन टाइम डेटा मॉडलिंग हमने यहाँ पे कर लिया, एक बार नॉर्मलाइज कर लिया, देन ईच टाइम व्हेन दिस विल बी लोडेड, या फिर इसके ये जो टेबल है उसमें हम कोई भी चेंजेस करेंगे,
then that will be reflected here in this data source. Next, here we have middle name, and in this middle name here we can see there are some null values available, right? So what I am going to do here, I'm just going to change this, replace this null with certain value, right? So for that, what I'll do, I'll just click on this, and then here we have the null information. I'll copy this, and then I'm just going to replace this with certain value, right? So for null, I'm just going to make this as a blank for now. I'll select this, right? I'll select this, and then here we have option to replace values. I'll just go and then click here, right? And here we have option that is null. अब null है उसको हम hyphen से replace कर रहे हैं, because I'm saying that जहाँ पे middle name नहीं है, we have only first name and last name, there I just wanted to print that as a hyphen there. I'll click OK, and now this will be replaced, right? जितने भी nulls थे उसको इसने replace कर दिया, and now here we can see that one more step is added here, right? In this, then next here we have last name. Also, I'll just check the last name, and we'll see that if we have any such thing where we can just perform the cleanup. So for now we are good for last name. इसमें कहीं पे भी कोई problem नहीं है. We are good for this. Next here we have the name style. So name style is something like false and true, right? So I don't need this one, right? So what I'll do, I'll just select this, right? And then also I'll remove this column also, right? So I don't need this name style here. I'll click on this, and then this column is also removed here. So here we have the birth date, and we'll see that if the data is valid, so this is good. Here we have all the information available. Marital status here, either we need the no M or S, so M or S information is only available, right? Here we have the suffix one, right? Suffix one is 100% empty. So I'll just remove this column also. I'll just click on this, and then I'll remove this column. So data normalization in Power BI is nothing but just keeping only the relevant columns, or and also if there are any data redundancy, right? Duplicate हो रहा है, multiple times एक ही information multiple table में जा रहा है, then we'll have to just remove that, right? Data redundancy भी हमें उसमें से हटाना होता है. So here I'm just checking all the columns, right? And we'll just keep only the required columns available for that. So here we have email address. I'll keep this email address as it is, right? So right now here we can see that all the email address is in lowercase, right? So for now we are good. But यदि हमें इसको lower से upper case में convert करना है, then even we can do that too, right? So for that, even I can just use the uh, M language here, right? Or what we can do, even we can just use functionality UI here to convert this in lower to uppercase, right? So I'll just go on transform, and then there we have option to change its case. Next here we have the yearly income, right? So this is also fine, and इसने इसका data type भी change कर दिया है. So we are good for this one too, right? Total children, right? For that, so here we have the numerical information. 0 is also available. So I'll keep this as it is. There are nothing to change in this. Then next here we have the number children at home, right? Then next here we have English education, Spanish education, and all. These all information are available in this data set. So we'll just perform the analysis here, right? And जहाँ पे हमें लगेगा कि these things that we don't require these information for now. I'll remove that, right? यहाँ पे सारा का सारा जो हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं, we are just using here the UI one, right? UI का यूज करके जो डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल है, उसी को यूज करके अभी हम इसको रिमूव कर रहे हैं, right? We are just performing the data normalization cleanup activity here. Now here we have the French information, so that is something. Here we have information, but if we don't need these, right, this information, right? So even we can just remove that from here, right? यदि हमें नहीं चाहिए सारी इंफॉर्मेशन कि कौन कौन सा कस्टमर है, उसको क्या आता है, राइट? वेदर ही नोज द इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच, then even we can just remove this from our data set. Next here we have the English occupation, right? Professional है या नहीं है, and all. It is 100%
filled one, and then even we can just see that हमें सेम चीज दो बार नहीं मिल रहा है, राइट? क्लर्कियल, मैनेजमेंट, मैनुअल, प्रोफेशनल एंड ऑल, स्किल्ड, मैनुअल. सो these are something that unique value we are getting here, राइट? हमें ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है जिसमें कि हमें लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हो, राइट? So we are good so far. Then I'll move here, and then here we have again own, French occupation, house, honor, flag, right? So whether certain people have house, their own home, or whether not, right? So that's why here we have the same thing. Also, we have captured that in this data set we have available this information. The number of car owns, right? So this information is also available. Address line 1, address line 2 is 100% blank. So what I'll do, I'll just select this. uh, okay, so 2% is valid here. So either what we can do, even we can just remove this, right? Let me just filter out the information whether this is valid or not. I'll just remove the null here, and then we'll see the information whether this is valid or not. If that would be not valid, then what we'll do, we'll remove the address line 2 from here, right? This is something it is telling about this one, right? So even what we can do, even we can just keep this if required, or what we can do, we can even remove this column also, right, from this. So there are very less data with us. So I'm not interested in this. I'll just select this, and then I'll remove this column from here. I'll select and then remove column. So I'll just remove this column from. This column is also removed. Now here we have the phone number. Then next here we have the date first purchase. This is the date when this customer is first purchased anything from that certain store here, right? Next here we have commute distance, right? So what is the distance from this store, right? ये यहाँ पे इवन कस्टमर का ये इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कितने माइल से ये पर्सन आ रहा है. So what is the distance here, right? So now what I'll do, I'll just keep this all information for now. जो भी हमें remove करना था हमने remove कर दिया. And now if we just go on Power Query section, right, in advanced editor here, then we'll see that it has generated some code also, right? So here first सबसे पहले इसने क्या किया, source is SQL database, and then it has just loaded the database, right? हमने जो database पास किया था उसको इसने load किया. Then now it has just picked the learning database, and in learning database से हमने कुछ data pick किया. So if I'll just remove this all and then only load this one, right, then even we can see कि ये किस तरीके से work करता है. I'll close this, and then I'll go here, right? And instead I'll just go here, right, and see it has just loaded the first database table one, right? So here we have the different tables, right? And then इसने फिर वहां से when we'll just navigate this, then it has just loaded some table here, right? So this is something data learning one. Learning से इसने pick किया है DBO, and that's it. Now we'll just move ahead, right? And ये जो हमने data load किया है, right, यहाँ पे even we can just perform the relationship in this part, right? So I'll just save and apply. Only I'll just apply the changes here, right? So that this can be loaded in Power View. I'll just go, and then we'll see that ये जो हमने टेबल अभी लोड किया है ये किस तरीके से दिखता है वहां पे पावर व्यू में. So अभी हमने जो लोड किया है डेटा, एंड वॉट एवर वी हैव परफॉर्म वी हैव यूज्ड हियर ओनली द यूआई पार्ट, राइट? अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें कि हम एम लैंग्वेज एम क्वेरी के थ्रू डेटा को लोड करेंगे, ब्लैंक क्वेरी क्रिएट करेंगे, देन विल जस्ट लोड द डेटा, राइट? एंड देन विल आल्सो परफॉर्म सर्टेन, राइट, क्लीन अप एक्टिविटी. बट हम वहाँ पे ये जो यूआई है उसका यूज नहीं करेंगे, जो डिफरेंट कमांड्स है उसका यूज नहीं करेंगे. वी वुड बी यूजिंग द एम लैंग्वेज, राइट? Let me just load this first. एंड ये स्लोनेस जो अभी पावर बीआई में आप देख रहे हो, दिस इज ड्यू टू क्योंकि हमने पूरा पूरा टेबल
को कॉल कर लिया है, राइट। हमने यहाँ पे क्वेरी नहीं लिखा है। सपोज यदि हम क्वेरी लिखते हैं एंड ओनली रिलेवेंट कॉलम को, यानी कि क्लीनअप एक्टिविटी जो था, यदि हम यहाँ पे ऑलरेडी एसक्यूएल में भी परफॉर्म कर लेते, राइट, देन वहां पे हमें सिर्फ ओनली एक सिंगल क्वेरी लिखते एंड देन दैट डेटा वुड बी लोडेड देयर, राइट। एंड हमें यहाँ पे पावर बीआई के अंदर जो हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं क्लीनअप एक्टिविटी, वो सारा कुछ हमें नहीं करना पड़ता, राइट, बिकॉज हम ओनली वैलिड कॉलम्स ही एंड रिक्वायर्ड कॉलम्स ही लेकर जाते हैं एंड ओनली फ्रॉम सिंगल इन सिंगल क्वेरी, राइट। ये दोनों के दोनों अभी दो क्वेरी हमने बनाना पड़ा है बिकॉज हमने यहाँ पे दो टेबल को लोड किया है, राइट। बट ज्वाइन का यूज करके, एसक्यूएल के ज्वाइन क्वेरी का यूज करके व्हाट वी कैन डू, इवन वी कैन जस्ट पिक डेटा फ्रॉम मल्टीपल, but in Power BI that would look like a single table, right? अभी हमने यहाँ पे तो परफॉर्म कर लिया, डेटा का जो एक्टिविटी था हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। देन आई जस्ट गो इन Power View here and then I'll go to relationship, right? So I'll just click on this and then here we'll see that ये जो दो टेबल्स यहाँ पे लोड हुआ था, right? Here we can see that इसने खुद ही अपना रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। I'll just go and then we can see इसने किस तरीके से अपने रिलेशनशिप, let me just move this, दिस इज समथिंग इंडिपेंडेंट वन, राइट, ऑर्डर्स का टेबल है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, सो दैट्स वाई इसका कोई भी रिलेशनशिप इसमें क्रिएट नहीं हुआ है। बट हम इन दोनों टेबल्स को हमने पिक किया है फ्रॉम डेटाबेस, सो दैट्स वाई दिस टू आर रिलेटेड टेबल्स, इसने खुद ही यहाँ पे जनरेट कर लिया। सो हियर वी कैन सी इसका रिलेशनशिप एक बार क्लिक करके चेक करते हैं कि इसने किस तरीके से रिलेट किया है। सो हियर वी हैव द डीम टेबल कस्टमर ज्योग्राफी की, राइट, फर्स्ट वाले में, एंड सेकेंड वाले में भी इसने ज्योग्राफी की का यूज किया। एंड देन रिलेशनशिप कार्डिलिटी इज मेनी टू वन, राइट। सो मेनी ज्योग्राफी की, राइट, फ्रॉम कस्टमर टेबल इज just related to the single geography key in dim geography column here, right? Now it has just performed the relationship, यहाँ पे ये related है। Now what we can do, even we can use this data to परफॉर्म। सपोज यदि हमें इसका रिलेशनशिप इसके बेसिस पे नहीं करना है, देयर आर अदर कॉलम आल्सो अवेलेबल, राइट, यूजिंग दैट इवन आई जस्ट वांट टू परफॉर्म द रिलेशनशिप हियर, या फिर जो रिलेशनशिप यहाँ पे है उसको हम एडिट करना चाहते हैं, सो इवन वी कैन डू दैट टू, राइट। बट अभी जो सिनारियो है उस केस में हमारे पास ओनली वन यूनिक की है, राइट, दैट वी कैन यूज इन दिस एंड हियर वी कैन जस्ट परफॉर्म द रिलेशनशिप। यहाँ पे हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर पाएंगे using this only single key here, right? In this way, what we can do, we can perform the डेटा मॉडलिंग है, राइट। हमने यहाँ पे डेटा मॉडलिंग क्रिएट कर दिया यहाँ पे ऑलरेडी, बिकॉज हमने डेटा को पिक किया है डेटाबेस से, सो इसने खुद ही अपना रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया बिकॉज दीज टू टेबल्स आर रिलेटेड टेबल्स, राइट। बट यदि ऐसा नहीं है, हमने क्वेरी से डेटा को पिक किया है, देन इफ यू वांट टू मेक द रिलेशनशिप मैनुअली, देन इवन वी कैन डू दैट टू, राइट। अभी जो ये ऑर्डर्स टेबल है दैट इज इंडिपेंडेंट वन, इसमें कोई भी कॉलम इन दोनों में से कॉमन नहीं है, दैट्स वाई इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इन दोनों टेबल्स के साथ, राइट। एंड इवन वी कैन नॉट यूज दिस ऑर्डर्स इंफॉर्मेशन विद कॉलम्स अवेलेबल इन दीज, राइट, दीज टू टेबल्स इन विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे हम पिक करते हैं, देखते हैं इन डेटा व्यू, राइट। सो हियर वी हैव लोडेड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर टेबल एंड ऑल्सो फ्रॉम ज्योग्राफी टेबल, राइट। एंड यहाँ पे भी हम यहाँ पे अगेन हियर वी कैन इवन परफॉर्म द एनालिसिस। यदि हमें इसमें कोई भी कॉलम्स है, यदि हमें रिक्वायर्ड है, वी कैन जस्ट क्रिएट द न्यू कॉलम, कंप्यूटेड कॉलम इन इट टू, राइट, यूजिंग डेक्स फंक्शन here. Now I'll just go on report view here, and in report view the data is loaded, all three tables are loaded here, and then we can just perform simple, जिस तरीके से हमें chart create करना है, even we can just perform the data, right, visualization part here। जिस तरीके का chart हमें create करना है, we can just create the chart here, right, using the appropriate chart, and then as per our requirement even we can just create chart। Now again we'll go to data module activity, sorry, power query module here। So this query module is open here। Now अब हम डेटा को लोड करेंगे, बट विल यूज हियर द पावर क्वेरी डायरेक्टली, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू यूज द GUI here, right, UI here,
I'm just going to use Power Query instead. Right? So for now, I'll just go here and then I'll click on new data source. And for now, I'm just going to use a blank query here. I'll click on this. जैसे हम blank query create करते हो, now this will just create a blank query for us, right? Then what I'll do, I'll just pass here equal to, and then I'll say, uh, first here I'll use, let me just see. So what I'll do, if we'll have to pick data from Excel, then we'll just use first code as Excel dot workbook, right? Otherwise, यदि हमें किसी और डेटा सोर्स से डेटा को पिक करना, सपोज जैसे हमने यहाँ पे SQL से पिक किया था, so if I just go on source, so first line would be the SQL dot database, right? And then उसके basis पे हम डेटा को load कर रहे हैं, right? So what I'll do, I'll just go here and then for now I'm just going to pick data from is Excel here, right? So I'll just pick here Excel workbook. जैसे हमने यहाँ पे एक्सेल डॉट वर्कबुक डाला, वर्कबुक एज बाइनरी, राइट? देन यूज हेडर एज एनी, डेटा टाइप एज नलेबल, जस्ट I'll just copy this instead here. Its first line है, I'll just copy this from here. So in this way, what I will do here, I'll just pick first the Excel dot workbook, and then here next function is file dot contains, right? So I'll just go here and then first let me just copy this. इसका path भी हमें लेना है. So I'll just copy this. Then here is blank query में, I'll just go here and then click here Excel dot workbook, right? Then I'll start here. Then I'll type here file content, right? And file content के बाद I'll just press start. So here, see here, it is just asking us file dot contains and path as a text हमें यहाँ पे pass करना है, right? So here we'll have to pass the full path of Excel. I'll just go in my data source and then I'll pick a data source for us. So I'm just going to pick this path, right? So I'll just use this one, sample superstore here, right? Now I'm just going to pass this data and then here I'll pick one of the table from this. अब हमें इसको text में pass करना है, so here I'll pass the path in double quotes here and I'll just run this, right? Now it has just performed here. Content current work was not current workbook I'm just using. So Excel dot, I'll have to Yes. just use workbook only, right? गड़बड़ है, टेम्पल डोर की बात. No. So here I'll have to use instead of Excel. Okay, so here we have Excel two times. Excel dot workbook. I'll have to pick the Excel dot workbook function, and then here we'll have to pick the file dot contents, and that's it. I'll just go here and then I'll run this. Now here this will be loaded, right? This will take, and then this will load all the tables available in it, right? So now here it has loaded, right? इसमें अब जो हमने simple superstore load किया है, in that here we have these tables information, right? Orders, then next here we have order and file database. For now I'll just pick this one, orders one. Then next here we have people and then returns. इसमें से हम जो भी टेबल पिक करना है, जो भी डेटा हमें नेविगेट करना है, we'll just use that as a item here, right? So here we have the name and then next here we have the data type here. So I'll just click on this. In this table here we can see, and now here we are just navigating here, right? So what it has did here, right? जैसे हमने इस पे click किया, now here you can see जो hyperlink था, hyperlink पे जैसे हमने click किया, now here we are seeing the, it has just generated code for us, right?
So either what we can do, even we can use these codes for other two, right? So right now we have just picked here only for orders one, right? But even we can just use the same for other data, other tables also, right? हमने अभी ऑर्डर को पिक किया है, यदि हमें दूसरा टेबल पिक करना है, सपोज पीपल वाला पिक करना है, देन अगेन हियर इवन वी कैन जस्ट यूज दैट टू, राइट? एंड देन वी कैन जस्ट क्रिएट सिमिलर काइंड ऑफ डेटा. सो यहाँ पे even not only using the UI, right? Even with the help of m query, even we can just load the data and then we can perform the cleanup activity here too. अब हमने डेटा को लोड कर लिया है, and now here I have just loaded only the sample superstore, right? Now, suppose so here we have the ship mode, right? And what I want, I just want that ये जो ship mode है उसमें उसे हमें इसके अंदर जितना भी जो information है, I just want that make this in upper case, right? So again here we have option to just format this, right? So for format this, what we'll do, we'll just click on this add steps fx1. I just click on this here, and then this will allow us to add the add the step here, right? So what I'll do, I'll just go here and then I'll just perform the option here, right? And I'll use here transform table dot transform, right? Here we have the table dot transform columns. So here we have different options available, right? As per our requirement, even we can just pick any one. So right now I'm just going to use the table dot transform columns here, right? So what I want, I just wanted to transform the columns. I'll just go and then I'll pick this, right? And now here we have, so the first parameter would be the table one, right? So ये जो सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है, that would be the table name here, right? Then next here we have to use transform operation as list, right? So power query के अंदर list is nothing but जब भी हम list की बात करेंगे, then curly braces will start here, right? Now what we'll have to do here, we'll have to just perform here the transform activity. And what I want, I just want that ये जो ship mode है, I just wanted to convert this in this as a, so here first I'll just pass the item here, right? So item के लिए I'll just pass here double quotes, and double quotes में हमने बोला यहाँ पे ship mode, right? And then next here I'm just going to use the text function, यानी कि हमें इसमें जितने भी है सबको upper case में convert करना है. So text function is, I just use here text dot upper, right? And then even we can just perform this here text and dot upper here, right? I'll pick this and then this will convert everything in uppercase here, right? Then last में हम ये जो हमने start किया है bracket, I'll just close that. Then I'll perform here. Now this will change it. Now here you can see, now it has just convert everything in uppercase. Similarly, यदि हम इसको proper case में करना है, then even we can just change this code. And here what I'll do, I'll just go here and then I'll remove this and then I'll pass here text dot proper case here, right? So here we have the proper one, and यहाँ पे हमें आगे पास नहीं करना है, जिस भी कॉलम में हमें अप्लाई करना है, फर्स्ट विल जस्ट पास द कॉलम नेम इनसाइड लिस्ट हियर, राइट? सो लिस्ट जब भी हम यूज कर बात करते हैं पावर बीआई के अंदर, देन दैट इज ऑलवेज कर्ली ब्रेसेस हियर, राइट? देन आई जस्ट रन दिस एंड नाउ हियर वी कैन सी, अब इसी को इसने क्या किया है, इट हैज जस्ट परफॉर्म इन, just converted this into proper case. Suppose although अभी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है अवेलेबल, बट सपोज यदि हमें लगता है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस हो सकता है, राइट? सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, इवन टू क्लीन दिस we can just add here, right? Do one more thing, and what we'll do again here, I'll use the table dot transform column, table dot transform column, right? Table dot transform columns here. Then I'll just pick, keep the first step. So step is custom 2 here. I'll just keep this as custom 2. I'll just double quotes and I'll pass here custom.
जैसे ही आप कोई भी फंक्शन इसमें लिखते हो, दिस विल जस्ट टेल यू अबाउट its parameters. So first it needs table, right? So table would be nothing but the last step. So here I'll just go and then I'll pick the last step, and then that is custom 2. Let me just see if we have the custom 2. Only we have the custom 1, but not custom 2. Custom and then 2. Oh, no. So let me see इसका name क्या है in advanced editor. So last step में इसका name क्या था? So that is here custom 2. Let me just pick this, right? Okay. No, so this is custom 1 only, right? इसका name custom 1 ही है. So what I'll do, I'll just pass here custom 1, right? I'll close this, and now what I'll do, I'll just pick the custom 1 here. Then next next here we'll have to pass the list. Second parameter जो है transform operation as a list. So for that I'll just start the curly braces, and curly braces के अंदर ही हम transformation की activity perform करेंगे, right? Suppose I just wanted to remove the extra spaces from the sip mode column, right? So सबसे पहले यहाँ पे column name pass करेंगे sip mode, right? And then so Power Query is case sensitive. Always use the data in appropriate case, right? जो exact case है उसी में pass करना होगा. Even functions are also case sensitive, right? यदि हम function यदि upper case में होता है तो हम lower case में उसको pass करेंगे, then that will not work. Then next what I'll do, I'll just use your text dot, then I'll just pass here trim. Just it means that I am just going to remove the leading and trailing data here. But if we'll have to just remove the data from extra spaces or double things from end, then even we can use end here. Next here text dot trim. यदि start से हमें कोई leading यदि spaces है उसको remove करना है, then we can just use this one. And text dot after delimiter, right? So even we can just use this. So let me just pick this. I'll just pick trim here only, and then I'll just go here and then I'll just run this. Now this query will run, and then this will just generate. So now here you can see again it has just added one more step here in this way. अब जो हमने ये query बनाया था, even we can just name this query as sample, or so I'll just say orders already हमने दिया हुआ है. So I'll just say sales data, right? It's sales table. I'll name this as sales. Now we are done, right? So here we have just loaded this sales table. Similarly, suppose यदि हमें इसमें एक conditional column create करना है, right? So इसी data set में एक और column create करना है on the basis of other one. Let's first perform its calculation, right? Now it is done. Then I'll just move here, and अब हमें इसी में जो डेटा अवेलेबल है उसी के बेसिस पे अगेन we'll have to create a column here. So what I want, I'll have to just create a computed column as per profit. So what I want, I just want that I'll have to just give a flag जहाँ पे भी profit is less than 0, right? Is there I have to just show the negative sign, right? Is or यदि जहाँ पे profit positive में है, I'll have to just show the positive here, right? So what I'll do, I'll just create here a column. I'll go and then I'll create a column here, right? So for now, I'm just going to create a conditional column. I'll click on this, right? And conditional column पे click करने के बाद this will allow us to create a conditional as per condition. So here we have the name, new column name, right? So I'm just going to give this as a profit flag, profit, and then flag, right? And I'll pick the column name here. So column name would be the profit one. I'll just pick this as profit. Then I'll say if this value is less than, right, less than 0, right? Then यदि ये less than 0 है, it means that I'll just pass this as a minus VE, right? Negative one. And else I'll just say
positive one. So what I'll do here, I'm just going to give a flag which row is positive and which row is negative here, right? And that's it. I'll click OK. And then this will create a conditional column as per our requirement. Now here we can see जहां पे भी ये positive value है वहां पे ये plus and V दे रहा है flag, and जहां पे ये negative value है there we are just getting only the negative one, right? In this way. Similarly, suppose I just wanted to add here an index column, right? यानी कि कितने इसमें total है, I just wanted to add here. So even we can just do that. What I'll do, I'll just go and then here we have option to it create index column. I'll click on this and then this will just create a index column for us, right? Now here we can see now index is started from 0 and then as many value, right, as many column is available in my data source, right? This will just add all the indexes here right in this. सारे के सारे जितने भी रोज हैं उसके लिए इसने एक एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया है, right? So in this way what we can do, even we can just create the index column here, right? Now if I just change this, I'll just say this as 1 and let me just see the output of this. Now it has just started with 1. So here I'm just picking this starting with 1 and then stepping this with 1. यदि हमें step इसको किसी other number से करवाना है, so I'll just change its second part. Suppose I'm just stepping this with 5, then I'll just correct this and now here we can see this will just populate the index accordingly here, right? Now it is just stepping this with 5. पहला first, then इसमें 5 add कर दिया. Now here we have 6 and so on, right? So even we can just use here the M language and I'll use table dot add index column and then the last wala step that was filtered rows. So filtered row would be the table here. Then what we'll have to do, index, then start कहाँ से करना है and step कितना करना है. So for now I'll just use this one, right? Because हमें इसमें 1 2 3 के basis पे ही इसको index कराना है, right? So in this way, what we can do, even we can just perform the data cleanup activity in Power Query here, right? Not only using the UI, right? Even we can just use here the M language to even convert the data in different here. इसी तरीके से यदि हमें custom column create करना है, then even we can just create a custom column as per our requirement in Power BI. Now let's do, अब हमने यहाँ पे सिंपल एक डेटा हमने लोड किया था एक्सेल से, राइट? नाउ व्हाट आई विल डू, अब हम यही वाला जो है डेटा सेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, ये जो एक्सेल फाइल है, बिकॉज दैट एक्सेल फाइल इज इन माय सिस्टम, राइट? ये जो हमने पाथ यहाँ पे पास किया है दैट इज इन माय सिस्टम, राइट? अब आपके पास जाएगा तो अगेन आइदर यू नीड दिस फाइल टू एंड फिर यहाँ पे इसी वाले लोकेशन पे आप डालोगे उसको या फिर यहाँ पे जाके लोकेशन चेंज करोगे, देन ओनली अगेन दिस विल वर्क, अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क. So that's why in Power BI we have even option to use the parameter to pass the data sources here, right? Suppose हमने यहाँ पे एक parameter create किया, so here we have a parameter, then I'll just create here a new parameter, right? I'll use here a new parameter and इस parameter में हम क्या करेंगे, जो sales के लिए हमने data pass किया था, I'll just say pass that. So I'll just pass here, this is the my data source, or I'll say sales data here, sales data in this, and then I'll say a type. I'm just going to use this as a, either we can use here binary or text or anything, we can just take here. But for now, I'm just going to use this as a any. Then here we have the any value, list of values or query. Even we can just pass here the query too, right?
बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू पिक दिस एज ए एनी वैल्यू फॉर नाउ, बिकॉज हम एक ही वैल्यू इसमें पास करेंगे, एंड देन करंट वैल्यू में हम क्या करेंगे, आई जस्ट गो हियर एंड देन आई पास द पाथ ऑफ दिस डेटा सोर्स, राइट? सो फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू पास दिस डेटा सोर्स। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हम ओनली पैरामीटर का डिफरेंस पास करेंगे अपने, let me just copy this path. So here we have the path, I'll copy this and then I'll paste it here, right? हमने इसको paste कर दिया and then I'll click OK. And that's it. It has just created a parameter for us, right? What we'll do, अब ये आपकी यहाँ पे दिखता रहेगा पैरामीटर में, जब भी आपके पास भी जाएगी, then this you even you can just see this value here. Now what I'll do, अब instead of this just passing the full path of that file, what I'll do here, I'll just pass the parameter, right? I'll just go here and then instead of passing this full path here, I'll pass the parameter. So here I'll pass the sales data parameter here, right? I'll just pass here sales data parameter here, right? So this is the parameter. अब यहाँ पे दिख रहा है हमें. I'll just pass this and that's it. I'll just run this and then this will load the same data available in this parameter here, right? क्या हो गया इसको? Okay. Parameter dot workbook dot files contains, right? And then here I'll have to pass the path as a text, right? So this will just take only the text, right? So sales dot data, here I'll use sales dot data. This is a parameter that contains the file path here. Okay, so this is not ready for this. But this would work generally. Why it is not working? Okay, let me just pass this for now, right? Here I'll pass this value and then this should work. This is open one, right? So that's why it is getting problem. Now it has loaded. Let me just first load the data, right? In using direct source. So I'm just going to use the new source. Then this time I'm just going to use the Microsoft Excel, right? And is Excel file say we'll just load this data set. So I've just loaded this, right?
देन इस जो फाइल है इसमें जितने भी टेबल्स हैं सारे के सारे यहाँ पे आपके लोड हो जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे. सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू पिक दिस वन, राइट, orders one. So I'll just go and then I'll pick the orders one. I'll click OK, and then that's it. Now it has just loaded a new file for us. So this is order dot to here. Then I'll go in source here, and in source I'm just going to change this with parameter. Replace the same with parameter here. हेलो सर। हेलो. सर मैं सर पूछ रहा हूँ कि सर मेरे पास माई एसक्यूएल है और आप सर एसक्यूएल का डेटाबेस बता रहे हैं सर, तो मैं कैसे करूँगा सर इसको प्रैक्टिस? आपके लिए क्या करना होगा कि इसमें जो इस आपके पास माई एसक्यूएल है, तो यहाँ पे डेटा सोर्स में जाएंगे आप, राइट, एंड डेटा सोर्स में फिर मोड में जाएंगे, एंड यहाँ पे ऑल द डेटा सोर्सेस आर अवेलेबल, राइट. तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे माई एसक्यूएल का जो ऑप्शन आ रहा है डेटा सोर्स में, even you can just pick that, and from there even you can just take the data. So here you have MySQL data source also, right. MySQL पे क्लिक करके कनेक्ट करोगे, देन यहाँ पे सर्वर का नेम डालोगे, राइट, एंड यदि वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपने कन्वर्ट किया है, देन इवन वी कैन जस्ट डू दैट. अभी मेरे सिस्टम पे ये अवेलेबल नहीं है, so that's why here I'm just getting this error here, right. ओके सर। Connector is required. And also जो पावर बीआई है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, एंड माइक्रोसॉफ्ट स्क्यूएल सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है. सो दैट्स व्हाई दीज टू टूल्स आर कंपेटेबल विद ईच अदर, राइट. सो ओके सर। इसलिए हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, राइट, एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको मैनेज यदि कर सकते हो, देन यू कैन जस्ट मैनेज दिस. सो अब हम यहाँ पे पास करेंगे सेल्स डेटा, राइट, एंड let me just run this. If it is, it will get the value. Okay, so legal illegal character in path, right. So here we have, अब इसमें क्या हमें ये पास नहीं, okay, so problem is here, right. सी, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हमने जो पैरामीटर क्रिएट किया था उसमें हमने पाथ से कॉपी करके डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया था, राइट. बट यहाँ पे हमें पाथ पास करना है, बट नॉट इन डबल कोट्स, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग. नाउ अब हमने इसको चेंज कर दिया. नाउ हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे फुल पाथ पास करने की जगह पे हमने ओनली इसको पास किया है, राइट, एंड देन इवन यू कैन जस्ट पिक दैट टू, राइट. आई जस्ट रिफ्रेश दिस इट्स प्रीव्यू, एंड देन ये रिफ्रेश करके आपको दिखा देगा कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है. नाउ हियर यू नीड नॉट टू पास और चेंज द डेटा सोर्स फ्रॉम योर क्वेरी, राइट. And I'll just go on source here, right, and in source even we can just see the information, right. एक पार्ट अभी इसका रह गया है आप लोगों का, दैट इज हाउ वी कैन जस्ट मर्ज द डेटा, राइट. यदि हमें ग्रुप बाय करना हो, स्प्लिट करना हो कॉलम को, देन हाउ विल डू दैट. अपेंड करना हो, अपेंड क्वेरीज एंड ऑल, so these are left here, right, we'll do that too. सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे अब डेटा जो आपका चल रहा है पैरामीटर पे चल रहा है, राइट. सो व्हाट विल डू, जब इसका मैं पीबीएक्स फाइल आप लोगों को शेयर करूंगा, देन यू नीड नॉट टू चेंज द पाथ राइट हेयर. यहाँ पे व्हाट यू विल डू, यू जस्ट गो हेयर इन पैरामीटर हेयर, एंड पैरामीटर में जो पाथ पास करोगे उसी डेटा को ये लोड करेगा, राइट. इस टेबल 2 में ये लोड हो जाएगा, एंड देन दिस विल वर्क डायरेक्टली, राइट. सो इन दिस वे इट वर्क्स, ठीक है. ओके गाइस, सो अभी अब इस पे थोड़ा सा आते हैं एसक्यूएल वाले पे पार्ट पे, राइट. दोज हु डोंट नो एसक्यूएल इट्स फाइन, राइट. अभी हम थोड़ा बेसिक सा करवाएंगे आपको, राइट. ऑल्दो दिस इज समथिंग दैट वेरी इम्पोर्टेंट जब हम वर्क करते हैं स्पेशली ऑन पावर बीआई या फिर एनी विजुअलाइजेशन टूल,
तो हमें डेटा को मॉडल करना पड़ता है। एक्सेल में यदि डेटा है तो एक्सेल में डेटा क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हमें एक्सेल आता है, सो इवन वी कैन जस्ट परफॉर्म द क्लीन अप एक्टिविटी इन एक्सेल इटसेल्फ बिफोर लोडिंग द सेम इन एनी बीआई मॉड्यूल, आइदर दैट इज टैबलो और पावर बीआई में उसको पोस्ट करने से पहले। बट एसक्यूएल का भी, एसक्यूएल यदि हमने यहाँ पे डायरेक्ट सारा का सारा दोनों टेबल यहाँ पे पास किया है डायरेक्ट डेटाबेस का कनेक्शन करके, देन हियर वी कैन सी इसने क्या किया, पूरा पूरा टेबल उठाकर ले गया, राइट। एंड देन यहाँ पे हमें मल्टीपल जगह पे जाके एंड देन परफॉर्म करना पड़ा है ईटीएल एक्टिविटी। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग दिस व्हाट आई जस्ट वांट दैट ये सारा का सारा हम ओनली क्लीन डेटा लेकर जाए, राइट। सो फॉर दैट व्हाट विल डू हियर, आई जस्ट यूज द ज्वाइन क्वेरी, राइट। सिंपल ज्वाइन, दो टेबल है हमारे पास, एक टेबल आपके पास है कस्टमर इंफॉर्मेशन, दूसरा है ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन। अब ये सारे के सारे कस्टमर हैं, उसमें से हमें ओनली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, बर्थ डेट लेकर जाना है, मैरिटल स्टेटस एंड जेंडर, एंड देन ईयरली इनकम कितना है, ये इंफॉर्मेशन लेकर जाना है इस वाले कस्टमर से। सेकेंड आई वॉन्ट हिज द कस्टम सिटी वन, राइट। सो फॉर दैट ज्योग्राफी जो दूसरा वाला टेबल है उसमें से हम इसको ज्योग्राफी लेकर जाएंगे। सो फॉर दैट हियर जस्ट टाइप हियर एंड देन इसको जब भी हम ज्वाइन लगाते हैं, दो टेबल से हम ज्वाइन करते हैं, तो हमें उसके ठीक पहले आइदर वी कैन जस्ट पास द फुल टेबल नेम, जैसे ये टेबल का नेम है तो पूरा पूरा टेबल नेम हम पास करेंगे, देन उसका हम कॉलम नेम पास करेंगे इस तरीके से। या फिर हम इसके लिए एक एलियास क्रिएट कर देंगे, सपोज हमने अभी डिम कस्टमर है टेबल है, उसके लिए हमने एक यहाँ पे एलियास बना दिया है सी, एंड देन डिम ज्योग्राफी है उसके लिए हम बना देंगे यहाँ पे एक एलियास दैट इज जी डॉट, एंड देन इसमें से हमें पिक करना है ओनली सिटी, राइट। सो आई जस्ट पिक द सिटी हियर एंड दैट्स इट, राइट। city and then state, province name, Spanish country, region. No, I don't want to uh, get any information, other information from geography one, right? Then next I'll use here from। सो एसक्यूएल के अंदर सिंपल सेलेक्ट क्वेरी का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले यदि हमें किसी भी वैल्यू को किसी टेबल से पिक करना हो, देन वी यूज सेलेक्ट, देन फिर हम कॉलम का नेम लिखते हैं, या फिर हमें सारे के सारे कॉलम चाहिए तो सिलेक्ट एंड देन एस्ट्री का यूज करते हैं, एंड देन फ्रॉम, एंड देन फिर लास्ट में हम टेबल का नेम लिख देते हैं, एंड दैट्स इट, वी जस्ट गेट द डेटा हियर, राइट। दिस इज वेरी सिंपल वन। एसक्यूएल के अंदर हम सिंपल इंग्लिश में वैल्यू पास करते हैं, एक तरह सिंपल इंग्लिश में क्वेरी लिखते हैं, एंड देन इट रिटर्न अस द data, right, from database। so now what I'll do, हमें सिर्फ अब इतना ही information pick करना है, right, and then here we have two tables, one is the dim customer, second one is the dim geography। so I'll just pass dim customer here, I'll copy this and then here I'll pass from dim customer। अब ये जो dim customer है उसके लिए हमने alias यहाँ पे बनाया है c, so I'll just pass here c। अब हमें इसकी ज्वाइनिंग करनी है दूसरा जो वाला टेबल है, बिकॉज ये दोनों टेबल अलग अलग टेबल है, इसमें इसका जो कस्टमर है उसका सिटी का इंफॉर्मेशन है, राइट, एंड ज्योग्राफी की जो है दोनों टेबल में अवेलेबल है, राइट। सो व्हाट विल डू हियर, I'll just use this geography key to join these two tables right together। so I'll just use here from dim customer c here, and then I'll pass here join। I'm just using here join, inner join here। join जब सिर्फ लिखते हैं इसका मतलब है inner join, यानी कि दोनों में जो मैचिंग रोज होंगे सिर्फ उसी को रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट साइड में यदि कोई वैल्यू इन्फॉर्म अवेलेबल है तो लेफ्ट का सारा, व्हाट आई जस्ट वांट दैट दोनों में जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही कॉमन इन्फॉर्मेशन ही पिक हो। सो दैट्स व्हाई हियर आई एम जस्ट यूजिंग आइदर वी कैन जस्ट पास हियर इनर ज्वाइन या फिर ज्वाइन, सिर्फ ज्वाइन भी पास करोगे तो वो इनर ज्वाइन की तरफ वर्क करता है। देन नेक्स्ट व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट गो एंड देन पास द सेकेंड टेबल, राइट। सो ये दूसरा वाला टेबल है, हम इसको पिक करेंगे, हमने इसको पिक किया एंड देन हियर आई पास the geography, right, and then I'll pass here G, right। ज्योग्राफी के लिए हमने जो एलियास बनाया था वो G बनाया था, right। एंड अब हमें इसको ज्वाइन करना है, देन देयर शुड बी अ कॉमन की जिसके बेसिस पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। सो नेक्स्ट कीवर्ड वुड बी हियर ऑन, एंड देन दूसरा वाला जो फर्स्ट वाला जो टेबल है दैट इज सी डॉट, एंड देन हियर वी हैव द ज्योग्राफी की, राइट। सो आई जस्ट पिक दिस C dot geography, is it connected or not, let me just see, let me just execute this query first, यदि connected है कि नहीं है, so that for that, okay, so now this is not connect,
I'll just use this database, इसी database में हमारा information available है. Now I'll just run these two queries जिससे कि हमें इसके सारे के सारे columns हमें मिल जाए. Right here we have the both the queries. अब इसमें से हमें ज्योग्राफी की पिक करना है एंड इस ऊपर वाला जो है उसमें भी ज्योग्राफी की अवेलेबल है. तो उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे वैल्यू ऑपरेट करवाना है. I'll just go here and then I'll pick the dot geography key. Right here we have the geography key and then equal to g dot geography key. Right and then that's it. Now we are done. अब ये query हमारा बन गया. Right so what I'll do, I'll just select these query and then I'll run this. Okay so last name, let me just see the last name का क्या है spelling. Last name हमने गलत लिखा है क्या? Okay so here we'll have to use the name, NAME. Right then last name हमें मिल गया यहाँ से. Now this query is valid. I'll just select this and run this query. Right हमने यहाँ पे रन कर लिया. Now here we have only the limited column. Right अब सारा दुनिया भर का कॉलम हमारे पास नहीं है. Only here we have the limited column. What I'll do, I'll just use this, copy this query and then I'll go in this. Right अब हम यहाँ पे यूज करेंगे again. I'll go and then I'll pick the SQL server. Right SQL server में हम पास करेंगे I'll use instead of import. Now here I'm just going to use the direct query, right? Direct query, and then I'll go here advanced option, and here I'll pass the SQL statement, right? Here I'll pass the SQL query directly here, right? And then next, but इसको use करने से पहले हमें इसका और भी information है वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा. So here we have the server name. So server is here. I'll just go and then pick the server name from here. Right I'll just again connect this and then यहाँ पे server name हमें मिल जाएगा. I'll just pick the server name. Server name में हम server name pass कर देंगे. Then this is optional one, right? But because here I'm just using the query one, so for that I need to pass this information. So I'll just connect this and then I'll pass the database name also, right? So I'll go and then I'll pass the database. Database is learning one. I'll just pass this here, right? And then I'll run this. I'll click here. And then this will just load the data in it. Now here we have the data. जो query जो return कर रहा है. Now we are getting the data from that here, right? ओनली लिमिटेड डेटा यहाँ पे रिटर्न हुआ है. अभी जब हमने टेबल डायरेक्ट टेबल को पिक कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था, दिस वाज जस्ट गेटिंग द एंटायर डेटाबेस इन योर सिस्टम, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड हियर, वी जस्ट रिक्वायर्ड हियर only the SQL knowledge so that even we can just pick only the limited column जिसकी हमें requirement है, सिर्फ उसी को पिक करें, सारा का सारा कॉलम हम पिक ना करें, right? In this way. So now here we have that this is just a query one like this. Then even I can just remove this and then I'll name this as a direct query, right? I name this as a direct queue and that's it. अब ये डायरेक्ट क्वेरी के साथ ये आपका डेटा यहाँ पे रन हुआ है. नाउ दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डेटा बेस, राइट? अब डेटाबेस में कुछ भी कनेक्शन, कुछ भी चेंजेस होगा, सो व्हाट इट विल डू, ईच टाइम जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या करेगा, ये क्वेरी फायर करेगा जो हमने क्वेरी यहाँ पे लिखा है. दिस विल जस्ट रन द क्वेरी एंड देन विल गेट द लेटेस्ट डेटा इन इट. इंस्टीड तो इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने क्या किया था, डेटाबेस को डायरेक्ट कनेक्ट, टेबल को डायरेक्ट कनेक्ट किया था, राइट? सो इन दैट वे व्हाट विल हैपन, ऑल्दो दिस इज समथिंग इंपोर्ट वन, इसने क्या किया, सारा का सारा डेटा इंपोर्ट करके आपके पावर बीआई के अंदर ले आया है, राइट? एंड व्हेन अगेन विल जस्ट रिफ्रेश दिस, देन अगेन दिस विल रिफ्रेश इट्स कनेक्शन एंड फिर से ये डेटा को इंपोर्ट करेगा पूरी तरीके से, राइट, डेटाबेस से. सो दिस मेथड इज लिटिल बिट स्लोअर वन देन दिस वन, जहां पे हम सिर्फ क्वेरी लेकर आ रहे हैं एंड ओनली लिमिटेड कॉलम को पुश कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, राइट गाइस?